Teams, I request you all to kindly turn on your cameras. We are going to begin with the session. Our guests will be joining very soon. So I request you all to turn on your cameras and switch off your mics.
वंदे मातरम। सभी को नमस्कार. I welcome you all for the third National Virtual Moot Court Competition. Now, before we begin the session, I request Miss Ritu Bhardwaj to kindly recite Vande Mataram before us. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र जोशना पुलकितयामिनी फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निराद कराले, कोटि कोटि भुजैर धृत खरवाले, की बोले माँ तुम्ही अबला, बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही रिद्धि तुम्ही मर्म, तं हि प्राणः शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदय तुम्ही मा भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तं हि दुर्गा दश प्रहर धारिणी, कमला कमलद विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि तां नमामि कमलां ममलां मतुलां सुजलां सुफलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्यामलां सरलां सुष्मितां भुष्मितां धरणी भरणी मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय। धन्यवाद रितु जी. Today we have all gathered here for third National Virtual Criminal Moot Court Competition organized by Delhi High Court Unit Adhivakta Parishad. Adhivakta Parishad Delhi High Court Unit has started its virtual moot court competition in 2020 amidst the pandemic season. And after 2 years of success, we are again here with our third virtual national moot court competition. I feel pleasure to announce that this year we got 81 registrations from all over India for this competition. I now request Senior Advocate Shri Sanjay Poddar ji to take over the virtual mic and welcome our esteemed guests and speakers. नमस्कार
Good evening, everyone. A very to our chief guest, Mr. R. Venkatramani, sir, the learned Attorney General for India. माननीय मीरा ताई खांडेकर जी, वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, the main speaker of the event, and माननीय श्री हरि बोरिकर जी, organizing secretary North Zone अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, the guest of honor. We are grateful to our guest for accepting the invitation for the opening ceremony of third National Moot Court competition being organized by Adhivakta Parishad Delhi High Court Unit. 40 law colleges have been selected to participate in this competition. I, on behalf of the Adhivakta Parishad, convey my good wishes to all the participants. Thank you. Thank you, sir. We have amongst us Mrs. Meera Tai Khadakkar ji, Vice President of Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad. Ma'am is retired. I welcome you, ma'am. Ma'am is retired Principal Judge and a member of Advisory Council of National Commission for Women. Ma'am was not only the chairperson of Advocate Council, but also the national chairperson of legal wing of Bharatiya Stree Shakti. Ma'am is also the Nagpur unit president of Jammu Kashmir Study Center. I welcome you, ma'am. I request ma'am to kindly take over the virtual mic and tell about and enlighten the students about the Adhivakta Parishad and the works done by the Adhivakta Parishad. सभी को मेरा नमस्कार। आज तृतीय मूट कोर्ट का कंपटीशन होने जा रहा है और इस स्पर्धा में मैंने पार्टिसिपेट करने वाले सभी स्पर्धकों को मैं शुभेच्छा दे रही हूँ। वैसे देखा जाए तो विधि विज्ञान जो है वो जीवन के सभी अंगों को स्पर्श करने वाला शास्त्र है। समाज जीवन सरल, विवाद रहित और सुचारू होने के लिए जो कुछ भी नियम बनाए जाते हैं उसे हम कानून कहते थे। कानून का डेफिनेशन पूछा तो पहले हम जब कॉलेज में रहते थे तो कानून का डेफिनेशन पूछा तो कॉमन सेंस में हम जब लॉ नहीं पढ़ते तब बोलते थे कि लॉ इज एन एस। बट सही में देखा जाए तो कानून का डेफिनेशन ये है कि लॉ इज नथिंग बट कोडिफाइड कॉमन सेंस। इतना सरल कानून होने के बावजूद भी जब हम न्यायालय में वकालत करने के लिए जाते हैं तो क्या हम वकालत कर सकते हैं? वो वकालत करना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारा यह प्रोफेशन, हमारा यह क्षेत्र ऐसा है कि जिसके लिए एक्सपीरियंस ये सबसे बहुत मायने रखता है और हमें पैरवी करने के लिए अनुभव की जरूरत होती है। पहले जमाने में पदवी का 2 साल की हुआ करती थी, बाद में हमारे समय में 3 साल की हुआ करती थी। 2 साल की विधि विज्ञान परीक्षा में सिर्फ पेपर ही हुआ करते थे। पेपर पास होने के बाद कानून की प्रैक्टिस शुरू होती थी। हमारे समय में जब 3 साल का कोर्स हुआ तो उसमें इंटर्नशिप का प्रावधान रखा गया, परंतु इसके बावजूद भी ये अनुभव हुआ कि इतने इंटर्नशिप होने के बावजूद भी वकालत करना उतना सरल नहीं है। और इसी दृष्टि से अभी विधि पदविका में मूट कोर्ट का प्रावधान किया गया है, उसमें सुविधा रखी गई है। तो ये सब देखते देखते धीरे धीरे अभ्यास करने का ये मूट कोर्ट हमारे व्यवसाय में, हमारे प्रोफेशन में एक्सपीरियंस को कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। और यह एक्सपीरियंस हमें जब तक नहीं मिलता तब तक हमारा अध्ययन माने वकालत करना कोर्ट में ये बहुत ही कठिन होता है। और अनुभव ये आया है कि जहां जहां यह अनुभव मिला है, जहां जहां मूट कोर्ट का ट्रेनिंग दिया गया है, वहां वहां परीक्षा पास होने के बाद वकालत करना सरल होता है। अधिवक्ता परिषद का उद्देश्य ये है
कि राष्ट्रीय विचारों के वकीलों का यह संगठन है। और ऐसे प्रोफेशन में राष्ट्रीय विचार वाले, राष्ट्रीय भावना से प्रेरित और एथिकल विचारों से एथिकल प्रैक्टिस करने वाले वकील, अध्ययनशील वकील, ऐसे वकीलों का संगठन अपने को बनाना है। और इसलिए हम जो चाहते कि आप जैसे स्पर्धकों जैसे जो लोग हैं वो जब वकालत में प्रवेश करेंगे तो इन सब बातों का अगर आपको ज्ञान हो, अगर आप अनुभव से ओतप्रोत हो, अगर आप अध्ययनशील हो और आप जानते हो कि अधिवक्ता परिषद का ध्येय यह है कि समाज के निचले माने व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना, सभी लोगों को सरलता से न्याय मिलना चाहिए और उनको न्याय दिलाने के लिए हम ही एकमात्र माध्यम है कि जो हमारे जो दीन बंधु है उनको हम माने न्याय दिला सकेंगे। उनके जीवन में जो जो कठिनाई आती है वो कठिनाई, कानूनन कठिनाई हम दूर कर सकेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी दृष्टि से आप लोगों को एक्सपर्टाइज देने के लिए ऐसी मूट कोर्ट की कॉम्पिटिशन्स होती जाती है। और इसी दृष्टि से मुझे लगता है कि अधिवक्ता परिषद हमारी दिल्ली की जो इकाई है उन्होंने यह कंपटीशन आपके लिए रखा है। ये स्पर्धा, मुझे बहुत बहुत ही खुशी है कि इस स्पर्धा में करीबन 80 स्पर्धक है, माने 40 टीम्स है। 40 टीम्स यह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वह अपना अपना परफॉर्मेंस तो होता ही है, पर जब हम किसी भी चीज के अध्ययन करते हैं तो दूसरों के परफॉर्मेंस से भी हमें सीखने को मिलता है। और स्पर्धक यहाँ आने से मुझे लगता है कि अपना परफॉर्मेंस विषय कैसे रखना है, कैसे करना है। वैसे देखा जाए तो आज आपके क्रिमिनल ट्रायल का ये मूट कोर्ट है, तो इसमें तो आपको बहुत सी बातों का अध्ययन करने को मिलेगा। ऑब्जर्वेशन से हम ज्यादा सीखते हैं। ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना या कौन से विषय में कैसे हमें सामने रखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, ये सभी बातों को हमें ऑब्जर्वेशन से सभी स्पर्धक तो है। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये तो स्पर्धा है ही, पर स्पर्धा से ज्यादा आप इसके तरफ अध्ययन की दृष्टि से देखें कि इस स्पर्धा से हम क्या क्या सीख सकते हैं, इस स्पर्धा से हम क्या क्या ले जा सकते हैं। और इसका प्रयास आप लोगों ने जरूर जरूर करना चाहती हूँ। कि मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि एक्सपीरियंस को हमारे वकालत में कैसा महत्व है। पहले एक आपको कहानी बताती हूँ कि पहले के जमाने में क्या था। एक नया नया वकील था जिसने कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं किया था, जिसने कुछ मूट कोर्ट नहीं किए थे, कुछ भी नहीं किए थे। वकालत में आने के बाद वो एक ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी को पूछा कि देखो मेरी वकालत कैसी चलेगी। तो ज्योतिषी ने बताया कि देखो बोले आपको शुरू शुरू में तकलीफ होगी, कुछ साल तक आपको, एक 7-8 साल तक पैसे नहीं मिलेंगे और बाद में बोले आपको पैसे नहीं मिलने की आदत हो जाएगी। ये रही पुरानी बात। पर मैं अभी की बात बताती हूँ। अभी ये कहानी में बदलाव हो गया है, क्योंकि क्या हो गया है कि अभी बच्चों को ट्रेनिंग मिलता है, बच्चों को कोर्ट की आदत होती है। आप सभी लोग पहले से ही कोर्ट में जाते हैं। यू आर यूज्ड टू कोर्ट एटमॉस्फियर, यू आर यूज्ड टू द वे in which arguments are to be presented. You are also used to means pay respect to the chair, pay respect to the seniors. ये सब बातें आपको ग्रेजुएशन के पहले ही पता चल जाती है। तो आप कहानी में ये ट्विस्ट हो गया है कि जैसे मेहनत आप करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी अच्छी आपकी वकालत होगी, आपका समाज में स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। और इसके साथ और एक बात और भी है। वो बात ये है कि जितनी हम एथिकल प्रैक्टिस करेंगे, हमारा चरित्र अगर अच्छा होगा तो हमारा समाज में निश्चित ही स्थान ऊंचा रहेगा। आप एक ख्याल रखिए कि एक जमाना था कि जब लॉयर्स या अधिवक्ता यह समाज के नेता हुए करते थे। समाज में नेतृत्व यह वकील ही करते थे, क्योंकि उसके लिए दोनों चीजें हैं कि वकील यह समाज को मार्गदर्शन करते हैं और जो मार्गदर्शन करने वाली व्यक्ति है वो अगर नीतिमान हो, समाज का हित चाहने वाली हो, समाज का हित सोचने वाली हो, तो निश्चित रूप से
वह आदर के लिए पात्र होती है। आज हम समाज में जो बदला हुआ चित्र देखते हैं कि कहीं कहीं वकीलों को इतना सम्मान नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए। तो मैं आप सबसे यही आशीर्वाद देती हूँ और यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी वकालत में आते वक्त ऐसे तरीके से आएंगे कि चारित्रवान, राष्ट्र प्रेम से भरे हुए, इससे लोगों से जैसे वकालत आप अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आप वकालत में अच्छा काम कर पाओगे। आप सभी से अन्य इतना बताना चाहती हूँ कि एक्सपीरियंस तो अपने क्षेत्र में आपको मिलेगा ही, परंतु इसे देख के भी इस मूट कोर्ट के स्पर्धक जितने आए हैं वो हमारे दिल्ली हाईकोर्ट की इकाई का मैं अभिनंदन करती हूँ। सभी लोगों से शुरू से ही आपको अनुभव मिल रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस मूट कोर्ट का जरूर फायदा उठाएंगे। आप सभी की स्पर्धक जो हमारे यहाँ पे है उनके भावी जीवन के लिए मैं आप सभी को अनेकानेक अनंत शुभकामनाएं देती हूँ और अनेक आशीर्वाद देती हूँ। आप सभी इससे बहुत अच्छा अपने साथ ज्ञान लेके जाएंगे, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद और शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद मैम, आपके प्यार और आशीर्वाद भरे इस संदेश का मैं आशा करती हूँ हमारे सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत लाभ होगा। मैम ने जो एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है कि आप उसमें जीवन से, किसी और के जीवन से सीखने से बेहतर क्या ही होगा। धन्यवाद मैम। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री हरि बोरीकर जी टू welcome the students and explain and enlighten them about the role of students in building the nation. Shri Hari Borikar ji, he is the National Zone General Secretary of Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad. Sir has been the organizing secretary of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. Shri Hari Borikar ji has worked in Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad in Nagpur and during his teenage. He has worked in Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh and Northeast for over a decade. In Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad, he was in charge of the university campuses. अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की केंद्रीय टोली में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की विनायक दीक्षित जी द्वारा घोषणा की गई थी। Now I request Shri Hari Borikar ji to kindly take over the virtual mic and enlighten the students about their role in nation building. I also request all the students to kindly turn on their videos because I'm not because it is as per the rules you will be getting disqualified if your videos are not turned on. So kindly requesting you again to turn on your videos. Shall I start? Yes, sir, surely. हाँ, Please. आज के इस थर्ड नेशनल वर्चुअल क्रिमिनल मूट कोर्ट कंपटीशन में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमण जी, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती मीराताई खड़गकर जी, दिल्ली प्रदेश के अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष श्रीमान अशोक कश्यप जी, महामंत्री श्री मनीष कुमार जी, आदरणीय संजय पोद्दार जी तथा हाईकोर्ट यूनिट के सभी कार्यकर्तागण और इस मूट कोर्ट कंपटीशन में बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ अपने कॉलेज की जीत हासिल कराने के लिए मैदान में उतरे सारे मेरे छात्र भाइयों बहनों, सबको अग्रिम शुभकामनाएं और आप सब लोगों का स्वागत है। मुझे लगता है कि मीराताई जी ने
बहुत विस्तार से मूट कोर्ट कंपटीशन की आवश्यकता क्यों है और उसके लिए हम सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इसके बारे में सबको एक विस्तार से बताया है। आज के वर्तमान संदर्भ में मूट कोर्ट कंपटीशन की आवश्यकता क्या लगती है और इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते किस प्रकार की तैयारी हमारे युवाओं ने, लॉ स्टूडेंट्स ने करने चाहिए। फिर वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होगी, नेशनल लॉ कॉलेजेस होंगे, या इस प्रकार के जुडिशियल की एग्जाम्स होंगे, इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज यह होना बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यह प्रैक्टिस कितनी और कहाँ पर हमको करने को मिलती है, मुझे लगता है कि मूट कोर्ट कंपटीशन एक अच्छा अवसर है जिसमें हम जो भी आर वेंकटरमण जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो वर्तमान में जितनी भी चुनौतियां हम सब लोगों के सामने है वो प्रैक्टिकल नॉलेज की है। बहुत बार हर क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज न होने के कारण बहुत बार जो छात्र कुछ करना चाहते हैं लेकिन शायद जब फील्ड पर जाते हैं तो उस प्रैक्टिकल नॉलेज के अभाव के कारण शायद अपना रोल पूरी तरीके से निभा नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि जिस फील्ड में आप लोग जा रहे हैं वह देश का एक आधुनिक और कानूनन आप एक प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, एक संविधान की रक्षा करने वाले आप बनने वाले हैं। और इसलिए संविधान की रक्षा करते समय हम भारतीय लोग इन सब की सुरक्षा रक्षा करना संविधान के तहत हमारा अधिकार है और उसको करने के लिए आप जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब रणभूमि में कोई योद्धा जाता है तो हथियारों के साथ सज धज कर ठीक से जाता है, बड़े उत्साह के साथ जाता है। मुझे लगता है ऐसे फील्ड में आप जा रहे हैं, निश्चित रूप से वहां पर हथियार मतलब जो आज के हथियार है उसका सामना नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को वहां पर दिखाना है, हमारे स्पीकिंग स्किल को दिखाना है, हमारे राइटिंग स्किल को वहां पर दिखाना है। और इतना ही नहीं तो हम किस प्रकार से किसी छोटे से विषय पर कितना रिसर्च करके हम कोर्ट में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं केवल एक छोटा सा प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय पेटेंट लागू हुआ था और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिस समय बना, उससे पहले 1990 में आर्थर डंकेल ने एक गैट्स नाम का एक बिल बनाया था और उसके आधार पर जो परंपरागत सीड हमारे थे वो उस पर अमेरिका रॉयल्टी लेगा, या भारत को रिसर्च करना है तो भारत को अमेरिका को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ऐसे नीम, हल्दी, बासमती, बैगन, ऐसे अलग अलग विषयों पर रिसर्च करने के लिए अमेरिका को हमको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। इस प्रकार की जब बात आई तो इंटरनेशनल ग्रीवेंस कोर्ट में हल्दी, नीम, नींबू, इन सारे विषयों पर परंपरागत भारत में इसको एज ए मेडिसिन हम इस्तेमाल करते आए हैं। इस बात को इंटरनेशनल ग्रीवेंस कोर्ट में स्थापित करने के बाद कहीं ना कहीं ये सारे विषय रॉयल्टी के लिस्ट में हटे और आज भारत ने जामुन, हल्दी, नीम, इन सब पर अपना अधिकार स्थापित किया, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत हमने अपना अधिकार स्थापित किया। लेकिन वैश्विक स्तर पर इन सारी लड़ाइयों को यदि लड़ना है तो कोर्ट में जाते समय मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे विषय हमारे सामने आएंगे कि जिसको शायद तैयारी के साथ हमको जाना पड़ेगा। और इसलिए एज ए इंटेलेक्चुअल कमांडो हम अपने आप को तैयार करके कैसे जाना चाहिए यह सीखना है। तो मूट कोर्ट कंपटीशन में कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी चीजों को भी हमको सीखने को मिलेगा कि किन शब्दों में, कितने शब्दों में और अपनी बात को रखना चाहिए, कंटेंट कैसे होना चाहिए, इन सारे विषयों पर आप कौन से फैक्ट्स साथ में दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नई चुनौतियां, नए अवसर हम सब लोगों के सामने आते हैं, नए प्रयोग, नए क्या प्रयोग आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसको भी आप सीखने को मिलेगा। नए उत्साह के साथ आप लोग जाएंगे और मूट कोर्ट से आप बहुत कुछ सीखकर वर्तमान लाइफ में अपने योगदान को आप देंगे, इतना विश्वास मैं आप सब लोगों के सामने रखता हूं। मुझे लगता है कि ये कंपटीशन है और इसलिए एक हेल्दी कंपटीशन की तरह हम सब लोग इसमें पूरी तरीके से मैदान में उतरे। केवल यह ना समझे कि वर्चुअल हो रहा है तो ठीक है, कैसे भी बोल देंगे, कुछ भी हो जाएगा।
ऐसे नहीं होना चाहिए। बी सीरियस, इंटरेस्ट के साथ और पूरी तैयारी के साथ जरूर मैदान में इस पूरे कंपटीशन में आना चाहिए। मैं बार बार मैदान बोल रहा हूँ, लेकिन मूट कोर्ट में ठीक से तैयार होकर आइए। पिछले बार पुणे कॉलेज ने शायद मुझे लगता है प्राइज लिया था, फर्स्ट प्राइज। इस बार भी कौन सा कॉलेज फर्स्ट प्राइज लेगा ये हम जरूर देखेंगे। और निश्चित रूप से आज जितने भी 120 स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस अवसर का निश्चित रूप से आप जरूर उपयोग करेंगे और आने वाले दिनों में एक अच्छे अधिवक्ता के तौर पर, मतलब मैं तो आशावादी हूँ, तो मैं ये भी देखना चाहूंगा कि इस मूट कोर्ट कंपटीशन में आज जितने भी स्टूडेंट आए हैं, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ये सारे चेहरे कहाँ रहेंगे। जो मैं सोच रहा हूँ उसी जगह आप रहेंगे, ये अपेक्षा मैं आपसे व्यक्त करता हूँ और आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है इसलिए मैं संक्षिप्त में कुछ बात बोली है, बाद में विस्तार से हम बोल सकते हैं। धन्यवाद सर। आपके इस मैसेज से मैं आशा करती हूँ सभी स्टूडेंट्स में एक स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी ने जन्म लिया होगा इसी वक्त, और वो अपने प्रोफेशन को एक कंट्रीब्यूशन फॉर द नेशन के रूप में उसका आगे उसमें बढ़ेंगे अपने प्रोफेशन में। नाउ वी हैव अमंगस्ट अस अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया श्री R. Venkatramani ji, who has joined us today as chief guest for formally inaugurating our moot court competition. I welcome you, sir. R. Venkatramani ji is an Indian constitutional lawyer and a senior advocate in Supreme Court of India. Sir has recently been appointed as Attorney General for India. Sir was appointed as a member of Law Commission of India in 2010. Sir has been appearing for the state of Tamil Nadu as Special Senior Counsel for the past 12 years and also acting as Special Senior Counsel for the state of Andhra Pradesh. I welcome you, sir. I request, invite you, sir, to take over the virtual mic and formally inaugurate the session of our third National Virtual Moot Court Competition and also motivate our budding lawyers which are present amongst us. Thank you so much. Good evening to all of you, and how I wish we are able to meet in the physical world and have this inauguration done in a physical space, jostling shoulders with all of you, and catching smile, and of course catching hearts too. I wish I could do that. Maybe when this program gets over. And it's my privilege to be part of this event today. Now, whenever a moot court event takes place, you will be told customarily what is the moot court, right? And the point is not about the success, and the point is not about that. All that kind of, versions about the moot courts. But let me talk something else today. Firstly, it gives me immense pleasure to be with all of you. And when I was a student of physics more than 45 years ago, my world was different. I was a serious student of physics. I thought I'll pursue a career in science, but destiny would not have it, and my course of life turned different and turned into law. A lot of people, friends, and in my graduation period who were responsible probably for my taking interest in the study of law. And when I began to study law, like many of the generation of people who studied law only with a view to enter a legal profession and entering into the court, and fascinated by all the archeries and the marvels we do in the court, given the adversarial legal system fighting against each other on either side,
the www fascination, right? That kind of a stuff. But I know that's only one part of the story. When you get into a moot court, it's part of a legal education. I'm not talking about the curricular part of it. I'm talking about the real legal education part of it. So you get educated on a variety of fronts. You get educated on how to draft a moot proper, then how to present a moot proper, but how to be with a lot of students around you, co-students, who again share the best in each one of you. When you share the best in each one of you, it is not only you demonstrate the best, but everybody captures the best in you. Therefore, it's a very interesting, arena where each and every one of us share with each other what is best in us. So I think in a moot problem, sharing the best in us is a very important component. And you not only share your intellectual best, but also your other skills. So that sharing, I think, is very important, because I think as a student of law, you must know how to share your knowledge, how to share your wisdom, how to share your experience. And but out of sharing, how do we gather a collective wisdom? Law, the function of law ultimately is in the process of sharing all our knowledge and wisdom. For what purpose? For a collective common good. So the moot court is like a small play in that process. And when you open up in the profession, you will know how true it really is. And therefore, one of my fond advices to students when you enter into a moot court is learn how to share. When you learn how to share, you will know how really it bounces back upon you. Sharing is not a one-way traffic. It's a mutual, exercise. That's number one. And the facets of a legal profession have changed over several years now. Many of you are products of a 5-year law course now are exposed to understanding of law, not merely from a statute book or a few case law here and there. So when we studied law, we had a statute book on the one hand and a case law on the other hand. Our teacher will tell us how to read the case law and how to understand the statute from the point of view of the case law, right? For what purposes? You enter the court and then your client on whose behalf you have to present a case. But today, the domains of legal knowledge, domains of the legal profession have vastly changed, and the kind of expertise required today to be a lawyer, not merely, when I say a lawyer, not merely somebody who is present in the court. Every one of us who acquires skills in law, understanding and comprehension of the roles of law, whichever role you play, whether you are a lawyer, whether you are a judge, you are an administrator, you are in public life, or you run your own organization, take any role you want to play. There, I think this kind of understanding of law is very, very important. So the changing facets of the law means what again today? Now, the role of law has become very different. So the role of law in the context of administration, this will have to be seen. So if you go back 30, 40 years ago, we were studying constitutional law as an independent subject. We study contract law, the personal law, the family law, or labor law as subjects independent of each other. But today, if I were to teach you all these subjects, I will teach you as one common connected subject. Why are they common and connected subject? Because they're connected by the Constitution. The Constitution connects each and every subject you study. So under the Constitution, you have all kinds of principles which connect fairness, rights, duties, obligations, power, structuring of power, moderation of power, regulation of power, prohibition of arbitrariness, so on and so forth. So the Constitution has now virtually changed the entire scenario of legal education. Therefore, you are exposed to understanding law through a different lens altogether. So very important, you must be very, very keen to capture the connection between, let us say, a civil procedure code or the criminal procedure code and the Constitution, or between a competition law and the Constitution, or between the intellectual property law and the Constitution. So unless you have these connections properly understood,
your study of case law will also be very, very probably defective. So, few tips on a question of a study of a case law. How do people like us do research when we did not have the internet with us? Or even with the internet now, what do I do as a researcher? I do my own research. Even though I have my juniors, I sit and read. And how do I pick up a case law? What do I read out of a case law? So there is every precedent, right, is not written in a new slate for the first time. It is not written in an empty slate. Every precedent must have some preceding principle, either available in yet another judgment, or a treatise, or some original understanding. So the way of reading a precedent is to go back to the roots of the principle. The principle of fairness lay in constitutional law. How did the principle of fairness evolve? What is the basis for that? Which is the source? So you must go back to the root. So as long as you go back to the roots and as deep you go back to the roots, you will find it a fascinating travel. Therefore, that's one way of reading the precedent. You will find in a precedent the number of reference to some earlier judgment. You pick up the earlier judgment, read that judgment. Probably you will find some other reference there. Please read that. So keep going back in point of time till you reach a place where your answer is established on the basis of an original principle. Right? That's how you read a precedent. Very often find in writing memorials or citing judgments in moot courts, I find you stop at a particular point of time. You read the precedent as if that's the end of the road. No precedent at the end of a road. Probably there are roads beyond that precedent. You must go, explore all possible roads in a precedent. That's how you will enrich your mind. The second aspect is to reading a statute. So when you read a statute, say you pick up a book, a provision. Let's say there's a provision, what is proved in the Indian Evidence Act. You please pick up that provision and read it. Read it 100 times. Every time you read, you will find a new way of looking at it. So the more you read a provision, the more and more you read it, you will find some questions which keep coming in your mind. A rereading and rereading of a statute is equally important. That's how what happens in a court. So the petitioner's counsel read the same provision, the respondent counsel read the same provision, the judges read the same provision. Now all of us read the same provision again and again and again. So when you read it again and again and again, you find something which might have missed earlier. Not only from even a comma or a full stop will make a difference. Therefore, reading a statute is not only a matter of art, it is also logic. So that takes us to the importance of logic in your understanding. So I suppose every one of you must be a keen student of logic. Now there are several systems of logic amidst us. There's the Indian system of logic, Nyaya Sastra, that are available in India. Then there are, of course, the foreign systems of logic. So how do you really pick up some basic principles of logic? I suppose in the 5-year law course, many of you have some course or their subject on Indian logic. I'm not very sure. Some law universities have the Indian logic as a subject. Some may not. So I suppose all of you must familiarize yourself with the systems of logic and study of logic. Why is it important? Logic shapes your mental process. It enables you to ask important questions. Why, how, when, what, why not, etc. There are 3 questions which a student of law will always ask. What is law? What ought to be the law? And what should be the history? What can be the history of the law? So when you ask these 3 questions and you then prepare your moot problem, perhaps you will be an enriched way of looking at it. But there are many ideas which one can share. And if only we were in the physical space, I would have taken more of your time. And it's a fascinating exercise for me to be always talking to students and sharing one's experience done over a period of time. But finally, what Srihari told you, today we are living in a globally connected world. All of us are told about it, but there are different aspects about globalization. There are the what called the good aspects. There are the hidden aspects. There are the what called aspects which can catch you up without your knowledge. There are the snares in globalization. Therefore, there are so many aspects of globalization. And the study of law in the context of a globalized world is also something very different from the study of law when we live in a closed world. Go to a country like China, they would have studied the domestic law. But look at the universities in China and how they are connected well with the rest of the world.
And whether they open up their country with the rest of the world or not is a different question. But they opened up themselves with the rest of the world. So therefore, globalization has two opportunities. One, opening up oneself with the rest of the world and allowing the rest of the world to be part of us in a way which we can manage. So globalization must also be managed in a way it doesn't hamper or impair or anyway destroy the important values of our own civilization and country. So the very important take from this is look at globalization, but how we as a nation, how we as a country committed to the most important values which keep us together as a nation. How do we really protect them? How do we really enhance them? How do we really transmit them, improve them? And then therefore that every one of us, men and women, right, can say that we have equal regard, we enjoy equal respect, there are no discrimination amongst us, all of us have the same kind of a welfare and well-being. Therefore, we as a great nation will continue to ensure that these great national values and heritage will continue to flourish. I think that's a great promise you must give to yourself as a student of law. And once you pledge like that, I think your path of exploration in this fascinating study of law will really, really be great. I have enjoyed it. I have enjoyed it in many measures. And I'm sure each one of you, when you step into the real world, where the real, not the mood, but the real problems give you immense challenges. And there, yes, I've been able to, by reason of my participation in mood problem, I am now competent, confident, and equipped to handle the real world problem. Therefore, the transition from mood problem to a real world problem is in that connection. Please make the best use of the connection. And I wish you all the best, and I'm sure I'll be able to meet soon in the physical space. Best wishes to all of you. Thank you so much, sir. Sir, your message full of experiences of your life has definitely boosted our students' motivation, and it will definitely help them to achieve the milestone in their life. I request all the students, especially, to kindly turn on their videos and do not leave the meeting, as we will be having draw of lots very soon. Now I request Shri Ashok Kashyap ji, President of Delhi High Court Adhivakta Parishad, to kindly take over the virtual mic and for vote of thanks. मेरा सबको नमस्कार. आदरणीय Venkatraman ji, Attorney General for India. Sir, you have given such a nice advice, and with your rich experience to all the students, I hope they will carry it to their heart and will do the same at the same time. Before giving vote of thanks, sir, I would like to congratulate you on your becoming Attorney General for India. Thank you very much, sir. माननीय श्री हरि बोरकर जी, ऑर्गेनाइजिंग जोनल नॉर्थ जोनल सेक्रेटरी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, आदरणीय श्रीमती मीराताई खादकर जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद. We are grateful of your esteemed presence for devoting your valuable time for the inauguration function of third National Moot Court competition organized by Adhivakta Parishad, Delhi High Court Unit. I, on my behalf and on behalf of Karyakartas of Adhivakta Parishad and office bearers of Delhi High Court Unit, who have relentlessly devoted their time to make successful the event, thank you very much to all for giving valuable time for the function. I also thank to all principals, directors of the colleges and universities who have sent their teams and students who are participating in the third moot court competition. I also thank to the participating students who have made this program successful and event, which is yearly function. Thank you all. Namaskar. Thank you, sir. Now we will be proceeding with the draw of lots of all the teams. So kindly be present when your name is called to maintain the transparency. We will be placing the bowls in front of the camera
and we will be doing the draw of lots for the teams to make sure who will be your opposite team in that. The timings will be told you later on. Right now, you will be told about the opposite team.